Hello students and welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 4 which is determinants. It is almost similar to matrices. Students matrices में जैसे हम लोग ने rows, columns और numbers के साथ खेला था, same thing यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं. We are just going to play with rows, columns and numbers. So it's very simple and interesting chapter. So let's begin. Firstly we are going to see some basics of matrices. तो पहले definition देख लेते हैं. What is a matrix? It was a rectangular arrangement of numbers or functions in rows or columns enclosed in brackets such as square brackets or round bracket is called as a matrix. मतलब सिंपल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स डाल दो सो इट बिकम्स अ मैट्रिक्स. देन वी हैड सीन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. इट इज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, तो मैट्रिक्स में आपको याद होगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होते हैं, रोज, एंड वर्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स. ओके, सो यहाँ पे ये मैट्रिक्स के पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है. सो द ऑर्डर इज 3/3. पहले आपको रोज लिखना होता है, फिर यू राइट द नंबर ऑफ कॉलम्स. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मैट्रिक्स बी. It is having how many rows? 2 rows, first row, second row, and columns have first column and second column. So the order is 2/2. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/1. 3 rows and 1 column. इसके पास 2 रो है और 3 कॉलम है, सो ऑर्डर बन जाएगा 2/3. Likewise, this matrix E is having 1 row and 3 columns, so the order is 1/3. And then you have matrix F, which is having 2 rows and 1 column, therefore the order is 2/1. Okay, now let us come to matrix representation. Suppose if we have a matrix A of the order m by n, so it is going to have how many rows? M rows. This is R1, R2, R3. Likewise, उसके पास m rows होने वाला है, and it is going to have n columns. So this is C1, C2, C3, and so on up till the last column is Cn. Okay, now we list the elements inside. इसको बोलेंगे A11 because it is lying in the first row, first column. इसको बोलेंगे A12 क्योंकि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. दिस इज लाइंग इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसलिए बोलते हैं A13. लाइकवाइज ये एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो एंड द nth कॉलम A1n. देन A21 इज लाइंग इन द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. A22 इज लाइंग इन द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. A23 इज लाइंग इन द सेकेंड रो थर्ड कॉलम. एंड लाइकवाइज दिस इज A2n. कमिंग टू द mth रो, दिस इज लाइंग इन AM1 क्योंकि वो mth रो में है और फर्स्ट कॉलम में है. AM2 means mth row and the second column. This is in the mth row and the third column. And likewise, the last element, it is in the mth row and the nth column, AMN. Clear? Now, let us come to determinants. So, a unique value associated with a matrix is called as a determinant. Students, matrix was just representation of numbers in a square bracket. वो हमको कुछ particular value नहीं देता था, okay? Whereas determinant is a unique value associated with a matrix. So for a matrix A, this symbol is read as determinant of A and not modulus of A. Now supposing if we have a matrix A of the order 2/2 and the elements are A, B, C, D, okay? तो इसका determinant हमको निकालना है, तो उसको लिखेंगे कैसे, determinant of A, which is written in 2 vertical lines. Square bracket को निकाल के we are going to write 2 vertical lines, and which is known as determinant of A, also written as det of A. Clear? So ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट. स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होता है तो ही उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है. मैट्रिसेस में वी हैव सीन लॉट मैनी मैट्रिसेस विद डिफरेंट ऑर्डर्स, ओके, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वगैरह वगैरह. बट डिटर्मिनेंट में एक अच्छी बात है, यू आर जस्ट गोइंग टू प्ले विद स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स. ओके, तो इन आवर सिलेबस वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 2 एंड द ऑर्डर 3. दैट्स इट. ओके, सो लेट अस सी नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर मीन्स इट इज गोइंग टू हैव 2 rows and 2 columns. Okay, so suppose if we have a determinant which is having the elements A, B, C, D, तो इसको बोलेंगे first row R1, this is called R2, this is called C1 and this is called C2. Now the elements A and D, ये जो आपको दिख रहा है, they belong to the principal diagonal, and this elements B and C, they belong to the secondary diagonal. So this is principal diagonal and this is secondary diagonal. Likewise, determinant of the third order पे आ जाओ. It is going to have 9 elements. Okay, so this is first row, second row, third row. This is column 1, column 2, column 3. Okay, तो इसके principal diagonal elements कौन से हो गए, A11, A22, A33. और यहाँ पे secondary diagonal elements कौन से हो गए, A31, A22, A13. Clear? So a determinant has 2 diagonals, principal diagonal and the secondary diagonal. Okay, now students, we come to evaluation of the determinant of the order 2/2. कि अभी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे किया जाता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 2/2. दिस इज द मैट्रिक्स A, so the corresponding determinant is 2 vertical lines A, B, C, D, and the value is evaluated by multiplying
the elements of the principal diagonal which is A and D minus the product of the elements of the secondary diagonal which is B and C. तो 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्युएट किया जाता है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, then you put a minus sign and then you multiply the elements of the secondary diagonal. So it is AD minus BC. Now let's take some example to get the idea more clear. तो देखो अभी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है. Okay, I am listing down some elements 1, 2, 3 and 4. So can you tell me what is the value of this determinant? पहले principal diagonal elements को multiply करो. So 1 into 4 is 4. Then you put a minus sign and then multiply the secondary diagonal element which is 3 into 2 which is 6. So your answer is minus 2. Clear? Let's take another example. D is suppose minus 1, 2, minus 1, 3. Okay. So इसका वैल्यू देखो कैसे निकाला जाता है. फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द प्रिंसिपल एलिमेंट्स विच इज माइनस 1 इंटू 3 क्या मिलेगा हमको? माइनस 3. देन यू पुट अ माइनस साइन. माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2. ओके, सो यू गेट माइनस 3 प्लस 2 विच इज माइनस 1. क्लियर? और थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 1. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. सो माइनस 2 इंटू माइनस 1 क्या हो जाता है? 2. देन पुट अ माइनस साइन. Minus 4 into minus 3 is what? Plus 12. You get 12. So 2 minus 12 is minus 10. Clear? अभी D is equal to determinant of 2, minus 3, 4 and 2. Now see the evaluation. 2 into 2 क्या हो जाता है? 4. अभी स्टूडेंट वी आर नॉट शोइंग द स्टेप. माइनस साइन रखो फिर राइट द वैल्यू. डायरेक्टली अभी थोड़ा इवेल्यूएशन करो. दिस इज 4 एंड देन माइनस साइन हमको रखना होता है. एंड 4 इंटू 3 क्या होता है? माइनस 12. तो माइनस ऑफ माइनस 12 इज गोइंग टू बिकम व्हाट? प्लस 12. तो अभी आपको ये स्टेप थोड़ा डायरेक्टली आ जाना चाहिए. ओके, सो 4 प्लस 12 इज गोइंग टू बिकम 16. लेट्स ट्राई आउट अनदर एग्जांपल. D इज इक्वल टू 1, माइनस 2, 3 एंड 4. प्लीज ट्राई टू इवेल्युएट. 4 इंटू 1 क्या हो जाता है? 4. फिर पता है हम लोग माइनस साइन बीच में रखते हैं. ओके, देन 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो स्टेप है ना वो डायरेक्ट अभी आपको मन में सॉल्व करना आना चाहिए. It is 4 plus 6 which is equal to 10. So after this step directly you should be able to imagine this step in your mind. Okay, let's take another example. Determinant of minus 1, 2, minus 3, minus 4. Please tell me what do we get here? Minus 1 into minus 4 क्या हो जाता है? 4. फिर माइनस साइन एक मन में रखो एंड माइनस ऑफ माइनस 6 क्या हो जाता है? प्लस 6. So your answer is 10. Clear? Understood? Let's take the final example which is minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Just try to answer. Minus 2 into minus 5 क्या हो जाता है? 10. फिर माइनस साइन एक मन में रखो एंड माइनस 4 इंटू माइनस 3 क्या होता है? प्लस 12 एंड दैट माइनस साइन. सो माइनस 12. सो इट बिकम्स माइनस 2. ओके, आपको एक बार ये 2/2 पे ग्रिप आ गया ना तो 3/3 बहुत ईजी हो जाएगा. तो दैट्स वाई आई एम प्रैक्टिसिंग मोर ऑन 2/2. क्लियर? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो यू शुड बी एबल टू गेट दिस स्टेप डायरेक्टली इन योर माइंड. ओके, अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड प्लीज़ इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट्स ऑन योर ओन सो एज टू गेट द कॉन्फिडेंस. Okay, let us move to the next topic which is evaluation of the determinant of the order 3/3 along row number 1. So suppose if we have a matrix A, this is having order 3/3, okay, and we convert it to a determinant. So you want to now understand how to expand this determinant, okay, along the first row. So I will just explain you briefly with the help of an example before going to the procedure, okay. तो एक चीज़ हमेशा याद रखो. I just want to show you something. ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है वो याद रखो. यहाँ पे इट इज़ प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस प्लस. ये सिर्फ आपके मन में अभी रखो. ये क्या है आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ शॉर्ट वाइल. नाउ यू वांट टू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 अलॉन्ग रो नंबर 1. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज हमारे पास है 1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1, 1. ओके, तुमको कहाँ पे एक्सपांड करना है? अलॉन्ग रो नंबर 1. सो अभी ये सब भूल जाओ, जस्ट फोकस हो गए. रो नंबर 1 के जो एलिमेंट्स है 1, -2 एंड -1. ओके, सो वी स्टार्ट विद द ईच एलिमेंट ऑफ रो नंबर 1. पहले स्टार्ट करेंगे 1 से. स्टूडेंट मुझे एक चीज़ बताओ, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं? कैन यू से इट इज़ लाइंग इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट को लिखो और फिर वो जहाँ पे लाई कर रहे हैं वो रोज और कॉलम्स को कवर कर दो. मीन्स इट इज़ लाइंग इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो आई विल कवर द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. और मुझे डिटर्मिनेंट मिलता है 4 एलिमेंट का विच इज़ 1, 2, 1, 1. तो
तो आपको करना क्या है, एलिमेंट लिखो, फिर उसको कवर करो कि वो जहाँ पे लाई कर रहा है वो रोज और वो कॉलम को कवर करो, एंड देन राइट द रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। फिर आगे जाओ, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -2। नाउ ये सीक्वेंस ये आपके मन में होगा तो आपको पता चला कि माइनस मीन्स व्हाट। तुमको अगर ये माइनस आपको यहाँ पे दिख रहा है तो इसके साइन चेंज करना है। ये अगर -2 है तो आपको क्या लिखना है, +2। ओके, हैड दिस बीन +2 यू वुड राइट योर -2। ये प्लस था तो मैंने दैट्स वाई यहाँ पे +1 है तो मैंने +1 ही लिखा है। सिंस ये माइनस आया है तो आपको इसका साइन चेंज करना है। ओके, एंड आई राइट डिटर्मिनेंट ऑफ। अभी मुझे बताओ ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज लाइक इन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आई कवर द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट मिलेगा आपको, विच इज 0 2 3 1। क्लियर, देन यू कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज -1। अभी ये प्लस है ना, तो प्लस डज नॉट मीन दैट यू हैव टू राइट दिस +1। प्लस मीन्स जो साइन आपको दिख रहा है वही आपको लिखना है, तो इट इज -1 ओनली इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। ओके, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो जस्ट कवर द फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, सो यू आर लेफ्ट विथ 0 1 3 1 0 1 3 1। ओके, नाउ ये सब क्यों किया है ऐसे, दिस ऑल कम्स इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर। तो अभी के लिए जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंड कि जो प्लस है उसका साइन सेम रखना है, जिधर आपको माइनस दिखा उसका साइन चेंज करना है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस साइंस क्योंकि वी आर एक्सपांडिंग अलॉन्ग द रो नंबर 1, तो वी आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट द रो नंबर 1 एलिमेंट्स। ओके, तो इन शॉर्ट वापस आपको बता दूं क्या करना है, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करना है तो उनके एलिमेंट्स पे फोकस करो। तो ये एलिमेंट लिखा मैंने, ये इसका साइन एज इट इज लिखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस दिख रहा है। ओके, सो प्लस मीन्स यू हैव टू राइट द सेम साइन, देन इट इज लाइंग वेयर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने उसको कवर कर दिया, तो ये 4 एलिमेंट का मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा। फिर आगे जाओ, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 इज -2। अब ये माइनस है ना, तो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है तो यू चेंज द साइन। ओके, सो इफ यू चेंज द साइन इट बिकम्स +2, माइनस का साइन करना है +2, एंड देन वेर इट इज लाइंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आई विल कवर दैट। सो यू आर लेफ्ट विथ 0 2 3 1, देन मूव अहेड। थर्ड एलिमेंट ले लो, इधर प्लस साइन दिख रहा है ना, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू हैव टू कीप द साइन एज इट इज। जो भी आपको इसका साइन दिख रहा है वो एज इट इज लिखना है आपको। ओके, तो आई एम गोइंग टू राइट द एलिमेंट एंड देन कवर इट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कवर कर लो, एंड ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। नाउ जस्ट नाउ वी हैव सीन हाउ टू एक्सपांड द 2 by 2 डिटर्मिनेंट, सो यू गेट 1 into, इधर क्या आ जाएगा 1 - 2, देन +2 into, इधर आ जाएगा 0 - 6, then -1 into, you get 0 - 3, so it is 1 into -1 +2 into -6 -1 into -3, so your answer is -1 -12 +3, which comes out to be -13 +3, which is -10. Okay, now I'll explain you the procedure of expansion of determinant along row number 1. So it is like this, -1/1 + 1 into A11 into determinant of this 4 elements. Now ये तो आपको समझा होगा कि ये A11 है और ये determinant of this 4 elements है। ये -1/1 + 1 क्यों लिखा, इट इज़ अ फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो कि हर एक एलिमेंट के पहले -1/, ये पावर क्या लेंगे, जो A11 एलिमेंट है उसका सफिक्स में 1 and 1 दिख रहा है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ओके, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज -1/, क्या लिखेंगे 1 + 2, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है A12, ये जो आपको 2 दिख रहा है। ओके, इंटू A12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कौन से 4 एलिमेंट हमको मिल रहे थे, A21 A23 A31 A33, तो वही 4 एलिमेंट हम लोग ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, देन मूविंग एट विद द थर्ड एलिमेंट विच इज A13, तो क्या लिखेंगे -1/1 + 3 इंटू A13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, यू आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, तो यही तो 4 एलिमेंट हमको मिलते हैं। ओके, दैट्स व्हाट वी हैव गॉट, 0 1 3 1। क्लियर, तो यहाँ पे अभी देखो स्टूडेंट, -1/2 ये क्या मिलता है 2, सो नेगेटिव टर्म रेस टू इवन पावर क्या हो जाता है पॉजिटिव, इसके लिए A11 का साइन हमको एज इट इज रखना है। क्लियर, फिर आगे जाएंगे तो -1/1 + 3, ये क्या मिलता है -1/, ऑड पावर मिलता है ना, इसलिए हमको मिलता है -1। ओके, आई मीन यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ A12, इसके लिए यहाँ पे माइनस लिखा है। Then you move ahead, you get -1/1 + 3, which is -1/4, which becomes again +1. इसके लिए you understand what is this plus minus plus? तो तुमको साइन सिर्फ किसका चेंज करना है, A12 का साइन चेंज करना है, और A11 और A13 का साइन एज इट इज रखना है। क्लियर, आर यू गेटिंग what is this plus minus plus? Means you have to change the sign of A12 element and keep the sign of A11 and A13 as it is. क्लियर, फिर तो आपको 2 by 2 एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड।
Okay, understood expansion of determinant along R1. Now let's move ahead with expansion of determinant along R2. Now students, आप लोग डिटर्मिनेंट को कौन से भी रो या कौन से भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हो. ओके, यू कैन एक्सपांड इट अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम. तो इफ़ यू आर एक्सपांडिंग अलॉन्ग रो 2, तो तुमको साइन किसका चेंज करना है पता है. A21 का साइन चेंज करना होगा और A23 का साइन चेंज करना होगा. तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो इसके लिए बताया है कि कौन से एलिमेंट का साइन आपको चेंज करना है और कौन से का सेम रखना है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. देखो अलॉन्ग R2 में, okay, if you see over here in this theory part, along R2 you have to change the sign of A21, A22 का साइन एज इट इज रखो और A23 का साइन भी चेंज करना है. तो ये प्लस मीन्स व्हाट, सेम साइन रखना है आपको. जो एलिमेंट का साइन है क्वेश्चन में वही आपको सेम एज इट इज कॉपी करना है. माइनस मीन्स व्हाट, यू हैव टू चेंज द साइन. इफ द एलिमेंट इज हैविंग प्लस साइन यू हैव टू मेक इट माइनस. इफ इट इज हैविंग माइनस साइन यू हैव टू मेक इट प्लस. ओके, अभी प्रोसीजर एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुमको वापस एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा. सर लेट अस टेक वन डिटर्मिनेंट अगेन ऑफ द ऑर्डर 3. सो -1 2 -1 3 0 -1. okay, and 1 -1 2. You want to expand along row number 2. Now students, try this out on your own. रो नंबर 2 के एलिमेंट्स पे फोकस करो. 3 0 -1 है. ओके, सो आपको फर्स्ट एलिमेंट लेना है 3. नाउ इसको साइन चेंज करना है कि नहीं करना है. यस, यू हैव टू चेंज द साइन. तो क्वेश्चन में देखो ये +3 है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, -3. सो -3 लिख दिया मैंने इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज द एलिमेंट विच इज A21. तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो यू आर गोइंग टू कवर द सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम. सो यू आर लेफ्ट विथ डिटर्मिनेंट ऑफ कौन से 4 एलिमेंट बच रहे, 2 -1 -1 2. ओके, तो यू आर गेटिंग 2 -1 -1 2. क्लियर. फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ R2 लेंगे विच इज A22. so which is I am going to write +0. okay, 0 में तो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बात हो जाती है. तो यू राइट -0 और +0 डजंट मेक एनी डिफरेंस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इट इज लाइंग इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो कवर द सेकेंड कॉलम एंड द सेकेंड रो. तो वी आर लेफ्ट विथ -1 -1 1 and 2. okay, and then you move ahead with the next element of R2 which is -1. अभी देखो साइन यहाँ पे R2 का चेंज करना है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, +1. सी इन द क्वेश्चन इट वाज -1, तो उसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ. कहाँ पे लाई कर रहे हैं वो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो कवर द सेकेंड रो, कवर द थर्ड कॉलम. सो यू आर लेफ्ट विथ -1 2 1 -1. क्लियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है व्हाट डज द साइन मीन. ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. -3 इंटू इधर देखो क्या आएगा 4. फिर माइनस साइन एक मन में रखना है एंड इनका प्रोडक्ट क्या है, +1. तो 4 -1. क्लियर. फिर 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो लेट इट बी 0. फिर +1 इंटू -1 इंटू -1 इज 1 एंड देन माइनस साइन एक मन में रखना है. 1 इंटू 2 इज 2. सो 1 -2. ओके, सो यू गेट -3 इंटू 3 +0 and then you get your 1 into -1. So your answer is -9 -1, which is -10. Understood? Let's take another example of expanding along R2. आप मुझे बता दे जाओ, इसका साइन चेंज करना है. इसके लिए माइनस, बिकॉज देर इज माइनस ओवर हियर, तो माइनस मीन्स व्हाट इज गोइंग टू बिकम +3. ओके, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कौन से एलिमेंट्स बनेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर लिया तो -2 1 2 1. ओके, so that's what you get here. Then move ahead, you get 0 0 into which 4 elements, 1 1 1 1. Then next element of R2 is -1. इसका साइन चेंज करना है. yes, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 1 and 2. clear? okay, so now if you simplify you are going to get this is your answer. तो प्रोसीजर में एक बार वापस देख लेते हैं. D इज इक्वल टू देखो -1 क्या मिलेगा, 2 + 1 इंटू A21 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A12 A13 A32 एंड A33. क्लियर. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज A22. तो -1 क्या लिखना है, 2 + 2 इंटू A22 इंटू A11 A13 A31 A33 का डिटर्मिनेंट. देन -1 2 + 3 नेक्स्ट एलिमेंट इंटू A23 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A31 A32 एंड देन यू सिंप्लीफाई. Okay, moving ahead with evaluation of the determinant of order 3 along column number 1. Okay, so we have done enough practice now. So please tell me, column 1 के along
एक्सपांड करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा, बोलिए आप। -1 रेस्ट टू यू आर गोइंग टू गेट 1+1 इंटू A11 इंटू कौन से 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेंगे, यू हैव टू कवर द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यू गेट A22 A23 A32 A33। क्लियर, ये समझा आपको। -1 रेस्ट टू 1+1 फिर A11 एंड देन डिटर्मिनेंट। फिर नेक्स्ट एलिमेंट अलॉन्ग कॉलम नंबर 1 है A21, तो व्हाट इज द फॉर्मेट यू गोइंग टू गेट, -1 रेस्ट टू क्या मिलेगा 2+1 इंटू A21 इंटू यू आर गोइंग टू कवर द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन से 4 एलिमेंट मिलते हैं हमको, A12 A13 A32 A33। क्लियर, देन मूव अहेड विद द नेक्स्ट एलिमेंट इज A31, तो -1 रेस्ट टू 3+1 लिखा इंटू A31 इंटू विच 4 एलिमेंट्स A12 A13 A22 A23। क्लियर, एंड देन यू सिंप्लीफाई, तो अगेन देखो नेगेटिव टर्म रेस्ट टू इवन पावर you get positive, means you have to keep the sign of A11 as it is. The -1 raised to 3 you have to change the sign, इसके लिए यहाँ पे माइनस लिखा है। The -1 raised to 4 which is positive, so that's why the sign of A31 remains as it is. अगर ये डिटर्मिनेंट आप मन में रखते हो with the signs, तो it's very simple and most probably we are going to expand along row number 1. So likewise students, you can expand along any row, any column to make calculations easy. We shall expand the determinant along that row or column which contains maximum number of zeros. इसका क्या मतलब है कि अगर ये रो नंबर 2 में आपको ज़्यादा जीरोस दिख रहे हैं तो एक्सपांड अलॉन्ग रो नंबर 2। इफ़ यू आर सीइंग मोर जीरोस इन कॉलम नंबर 3, एक्सपांड अलॉन्ग कॉलम नंबर 3। ओके, सो दैट्स द वे यू हैव टू थिंक एंड देन सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट सिंपल लॉजिक है, देखो अभी जिसका सम ऑफ द सफिक्सेस इज ऑड उसका साइन चेंज करना है। जैसे कि ये A12 है ना, तो 1+2 क्या होता है 3, तो इसका साइन चेंज करना है हमको। ये A21 है तो 2+1 क्या होता है 3, तो यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ दिस एलिमेंट। इफ यू आर एक्सपांडिंग अलॉन्ग रो 2 तो यू नीड टू चेंज द साइन ऑफ A23 क्योंकि 2+3 5 होता है। ओके, एंड अगेन इन द सेम लाइक A32, तो 3+2 इज गोइंग टू बिकम 5, दैट्स व्हाई यू नीड टू चेंज द साइन ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स। तो अगर कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहे हो तो A21 का साइन चेंज करना है। If you are expanding along row number 1, so you just have to change the sign of A12 and so on. Okay, so now let's move to the exercise 4.1. Question number 1. Evaluate the determinant in question number 1 and 2. So simple 2/2 determinant is given. तो इधर बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 2 into -1 is -2, then you put a minus sign in between, -5 into 4 is -20, so minus minus becomes plus, so -2 plus 20 it becomes 18. Okay, likewise coming to the next question, cos theta into cos theta is going to become cos square theta, then minus sign in between, sin into minus sin theta, so minus in minus becomes plus, so cos square theta plus sin square theta is 1. Okay, then you have second sub question, again 2/2 determinant है, so you multiply the principal diagonal elements minus the secondary diagonal elements, expand the bracket, you get these terms, minus this is like a plus b into a minus b, which is a square minus b square, and if you simplify you are going to get this as your answer. Okay, coming to the third question, matrix A is given to us of the order 2/2. You have to show that determinant of 2a is same as 4 times determinant of a. Okay, so let us start with LHS. determinant of 2a पूछा है, तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 2a 2a मीन्स इफ यू रिमेंबर 2 into मैट्रिक्स A, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा तो हर एक के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, so you are going to get here 2 4 8 4, and then you want to find determinant of this matrix, so you get determinant of 2a, so if you evaluate you get -24, so this is your LHS. Coming to the RHS, it is 4 times determinant of a, तो 4 times इसका determinant लिखो यहाँ पे, so you get here 2 minus 8, so 4 into -6 which is -24, so LHS equal to RHS. Okay, likewise in the fourth question, matrix A is given to us of the order 3/3. You want to show that determinant of 3a is 27 times determinant of a. तो पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। determinant of 3a फाइंड करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू फाइंड 3a. ओके, so it is 3 into matrix A, so perform scalar multiplication over here, 3 multiplies with all the elements. Okay, now you want to find determinant of this matrix, so we are expanding along row number 1. so row number 1 में स्टूडेंट्स याद है आपको साइन किसका चेंज करना है, सिर्फ A12 का साइन चेंज करना है, बाकी दोनों का एज इट इज रखना है। ओके, सो इसका साइन एज इट इज रहेगा, 3 इंटू कवर द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो यू गेट इसका डिटर्मिनेंट बोलो क्या आएगा, 12 3 36 माइनस 0। ओके, देन यू कम अहेड, ये 0 है तो साइन चेंज करके मैंने -0 लिखा, इट इज लाइंग इन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो कवर दैट, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 12 इंटू 0 इज 0
-6 into 0 is 0. Okay, moving ahead with the third element of R1. तो इसका साइन एज इट इज रखना है तुमको, तो +3 है तो +3 लिखना है. कवर द फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, सो यू गेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4. तो 0 into 0 is 0, -0 into 3 is 0. Okay, so if you simplify you get 3 into 36 which is 108. तो LHS का आंसर हमको आ गया 108. Coming to the RHS, it is 27 times determinant of A. So 27 times determinant of A. Again we expand along row number 1. तो row number 1 में स्टूडेंट्स किसका साइन चेंज होने वाला है? 0 का साइन चेंज होगा. ओके, सो you get 1 into, cover the first row first column, so you get 4 minus 0. Then move ahead, you write -0. It is lying in first row second column, so cover that. So we get here 0 minus 0. Okay, moving ahead with the third element which is A13. So cover the first row and the third column, so you get 1 into 0 minus 0. Okay, so if you simplify here you get 27 into 4 minus 0 plus 0, which is 27 into 4, which is 108. Clear? That's your LHS. Okay, coming to the fifth question, evaluate the determinant. So we write D is equal to the given determinant. Now we are expanding along row number 1. Okay, so row number 1 में किसका साइन चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स? We change the sign of A12. Okay, keep the remaining terms के sign as it is. तो starting with 3, it is lying in the first row first column. तो first row first column cover कर दो. Okay, so you get 3 into determinant of this 4 elements which is 0 minus of -5 into -1 क्या होता है? +5. तो 0 minus 5 which is this term. Then move ahead, इसका साइन चेंज करना होता है तो ये +1 लिख लो. Then where it is lying first row second column, तो cover that into determinant of 0 minus of -3 which becomes +3. And then take the next element, इसका साइन आपको as it is रखना है. -2 into determinant of, you take this, so you get 0 minus 0. Okay, so if you simplify this you are going to get your answer as -12. Okay, moving ahead with the second question. Let D is equal to the given determinant. Now expanding along row number 1. वापस किसका साइन चेंज करना होता है? ये एलिमेंट का A12 का साइन चेंज करना है. ओके, सो यू राइट 3 into, cover the first row first column, you get, इसका डिटरमिनेंट बोलो क्या आएगा? 1 minus of -6, so it becomes 1 plus 6. Then since it is -4 you write +4 and cover the first row second column, so इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 minus of -4 becomes 1 plus 4. Then move ahead, you get 5, इसका साइन as it is, cover the first row third column into determinant of, आपको मिलेगा 3 minus 2. Okay, so you get 3 into 7 plus 4 into 5 plus 5 into 1 which is 21 plus 20 plus 5 which is 46. Okay, moving ahead with the third question. Let D is equal to the given determinant. Expanding along row number 1 again. So किसका साइन चेंज होगा? 1 का साइन चेंज करना है, तो ये +1 है तो हम लोग -1 लिखेंगे. ओके, so 0 into, cover the first row first column, so you get your determinant of this 4 elements, so it is 0 minus of -9 becomes 0 plus 9. Then +1 है तो यहाँ पे लिखो -1 into determinant of, cover the first row second column, so you get this 4 elements, so it is 0 minus of 6, 0 minus 6. Okay, then +2 into, cover the first row third column, so you get your -3 minus 0. Okay, so if you simplify this you get 0 into anything is 0, -1 into -6, 2 into -3 which comes out to be 0. Moving ahead with the fourth question. This is the given determinant. Expanding along row number 1. So we are going to change the sign of A12, तो ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा? +1. बाकी दोनों एलिमेंट के साइन as it is. Okay, so 2 into, cover the first row first column, so you get your 0 minus 5. Then -1 है तो लिखा +1 into determinant of first row second column cover कर लो, so we are going to get your 0 minus of -3 becomes +3. Okay, then take the next element, इसका साइन as it is लिखना है. -2 into, cover the first row third column, so we get your 0 minus 6. Okay, so your answer is 2 into -5 plus 1 into 3 minus 2 into -6. So you get the answer as 5. Okay, likewise in question number 6, A is given to us, you want to find determinant of A. तो वापस we are expanding along the row number 1. Students, किसका साइन चेंज होगा? इसका साइन चेंज होने वाला है. Okay, so 1 into, cover the first row and the first column.
तो वी आर लेफ्ट विथ ये हो जाएगा -9, देन माइनस ऑफ -12 becomes +12. Then since this is +1, you write -1. So cover the first row and the second column. So we are left with these 4 elements. So 9 into -2 is -18. Then minus of -15 becomes +15. Okay, then the third element ka sign as it is. Into cover the first row and the third column. So you get your 8 minus 5. So 1 into we get 3, -1 into -3, -2 into 3, which is 3 plus 3 minus 6, which is again 0. Moving ahead with the 7th question. Find the values of x if you have 2 by 2 determinant on both the sides, which may equal to sin n. Okay, so you expand this determinant, you get 2 minus 20 is equal to 2x square minus 24. So 2x square is equal to 24 minus 18. So 2x square is 6. So x is equal to plus minus root 3. Likewise, you expand the determinant on both the sides. So you get your 10 minus 12, 5x minus 6x. So you get minus 2 is equal to minus x, therefore x is equal to 2. Clear? Question number 8, again the same thing, MCQ question. So expand the determinant on the left hand side, you get x square minus 36 is equal to 36 minus 36. So this becomes 0. The x square is equal to 36, the x is equal to plus minus 6. Okay students, so this completes the first exercise. I hope you understood the evaluation of the determinant of order 3 by 3 along any row or any column. Okay, so in the next lecture we move ahead with the next exercise. Till then, take care and goodbye.